move on to our second session of the morning. Goodness, it's been quite jam-packed in terms of information. May I please request Badar Khushnood, who's the chairman of P SHA, to join me on stage. Badar Sahab will be talking about the magic moment of e-commerce, and I'm sure he's got a lot of information to share which will enthrall you and probably blow your mind. But Badar Sahab? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं छोटी सी क्विक प्रेजेंटेशन तो ज़रूर करूँगा, मगर वो मैं अभी तारिक साहब और शमून के मैं सुन रहा था कि ई कॉमर्स ज़रा स्लो ग्रो कर रहा है, एंड दैट्स समथिंग विच आई विल प्रॉब्ली चैलेंज इन अ लिटिल डिफरेंट वे। तो मेरा ओपिनियन थोड़ा सा इस पर डिफरेंट है कि क्या हो रहा है। मेरे इस वक्त दो पर्सपेक्टिव्स हैं जी। ऑफ कोर्स एक मैं पाशा के एंगल से बात कर रहा हूँ, विच इज़ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, एंड एज पाशा जो हमारी एसोसिएशन है इज बिकॉज the reason I am there as a member is because of our company Fishery, which is an e-commerce platform. तो मैं थोड़े से कुछ डेटा वगैरह शेयर करूँगा just so that, and this is more from an SME perspective. I know most chain stores have evolved, most chain stores have evolved into a large or a medium-sized organization. So पहले थोड़ा सा हम clear कर लें कि कौन-कौन से business models अभी operate कर रहे हैं पाकिस्तान में. So one is a B2B, of course. अभी by the way B2B space जो pure B2B है वो पाकिस्तान में कोई tech space में खास player नहीं है, like Alibaba. So there is Alibaba from China, but there is no local player in that space right now. And then there is B2B from a wholesale to retail perspective या B2B procurement के perspective. इसमें आपने देखा अभी recently बहुत investments भी आई startup के perspective से, और कुछ players हैं जो different landscape में, for example खरीद is from a procurement perspective. So in that case, there is one buyer, multiple sellers. In case of sales flow, retailu, tajir वगैरह, उस case में they are wholesale to retail, W to R वाला जो category है वो उसको serve कर रहे हैं. So for FMCG और उनसे लेकर करियाना store को, तो करियाना store की procurement को automate कर रहे हैं. So that's the space they are into right now. And then if you come down, there is a B2C marketplace जो हम सब देख रहे हैं, दराज, फूड पांडा, OLX, मॉल वगैरह, they are all these B2C marketplaces. और उससे भी नीचे आ जाएं तो you have the consumer to consumer और peer to peer marketplace वाला जो पार्क व्हील्स और ज़मीन और ये वाला सारा हम देखते हैं. So these are different e-commerce models. इनकी monetization फ़र्क है, इनकी objective फ़र्क है, सब कुछ फ़र्क है. There is another space which is called direct to consumer. That's a space where we play in, जहाँ हम ब्रांड्स को इनेबल करते हैं कि वो अपने ऑनलाइन ब्रांड स्टोर्स खुद रन करें, एंड वी वर्क विद देम एट द बैक एंड एज अ टेक स्टैक एंड अ मार्केटिंग स्टैक. तो हम उनका टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग का स्टैक मैनेज करते हैं, एंड द ब्रांड्स have their owned asset, which I'm going to talk about little. But just wanted to clarify कि ये different models हैं जिसके अंदर e-commerce space में इस वक्त काम हो रहा है. So जो majority investments last year में आई हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो procurement वाली साइड पे आई हैं, B2B procurement वाली साइड पे, जितनी रिटेलू, ताजिर और ये सारी कैटेगरी थी, that was the space. From a B2C retail perspective, अगर आप देखें तो तकरीबन $5 ट्रिलियन की global e-commerce थी last year. This was third party data, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, but ballpark figure is around $5 trillion. That is approximately 18% from a digital to retail ratio. So web to retail या e-commerce to retail ratio is around 18%. ये ratio different countries में vary करती है, and we'll just talk about this, but this is the global average right now जो दुनिया में चल रही है. और अगर आप पेंडेमिक का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये यूएस में आप देख सकते हैं कि कैसे चेंज आई, even in a developed market like US, how this evolved very, very quickly. So US was around 18% and it jumped to around 27%, sorry, from 10 to 27% just during COVID. So online purchasing behavior change हुआ बहुत rapidly even during pandemic. Just putting Pakistan into perspective, we have about 220 million people, जिनमें से तकरीबन 190 million now have a mobile phone. This is the latest PTA data. और इस 190 में से आपको 110 million are right now connected to 3G and 4G. ये सिर्फ 3G 4G के actual connected users हैं जो PTA का official data है. This is approximately 50% of the population, which is not small.
आपके 110 मिलियन पीपल कनेक्टेड हैं। सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन 5 मिलियन है, उनको आप 4 फ़ोन भी देते तो 20 मिलियन बनेंगे। वी हैव 100 मिलियन पॉपुलेशन ऑलरेडी कनेक्टेड। द ओनली चैलेंज इज कि हुकूमत पाकिस्तान अच्छी डिवाइसेस के ऊपर टैक्स लगा देती है, सो द क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी इज पुअर। हुकूमत पाकिस्तान आपके बैंडविड्थ के ऊपर टैक्स लगा देती है, विच इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो एक तरफ हुकूमत चाहती है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि डिजिटाइजेशन हो, दूसरी तरफ हम लैपटॉप के ऊपर 17% टैक्स भी लगा देते हैं। तो ये एक डायकोटमी है जिस पे हम एसोसिएशंस लाइक चेन स्टोर एंड पाशा वी फाइट एवरी सिंगल डे, बट दैट्स द चैलेंज विच इज़ हैम्परिंग फर्दर डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। मगर जो भी शमून बात कर रहे थे KLI वाली, आई थिंक वी आर विद दिस नंबर, हमारा एक्सेस टू मार्केट बहुत बड़ा हो गया, डिजिटल एक्सेस टू मार्केट। मॉल्स में कितने लोग आएंगे जो 10-20 किलोमीटर रेंज के लोग हैं, दिल ड्राइव इन और वॉक इन, बट समवन हु इज 400 kilometers away will not walk into a mall every single day. So this is where everyone will walk in. So if 110 million people will walk into your store every single day if they like to. So that's where the TikToks and the Facebooks and the Twitters and the Instagrams of the world are growing, and we need to capture that space. The challenge is on the right side, that we don't have enough digital payments. Only 20% of the economy is banked. 20% पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट है, और इसके अंदर अगर आपके 2 या 3 अकाउंट और मेरे या 2-3 अकाउंट है, वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें जैज़ कैश, ईजी पैसा, मोबाइल वॉलेट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एंड द वर्स्ट पार्ट इज द प्लास्टिक मनी इज ओनली 1%। क्रेडिट कार्ड्स सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास हैं पाकिस्तान में। जो डेबिट कार्ड्स हैं दैट्स अराउंड 10 to 15%. So there's a huge challenge in terms of the digital payments ecosystem. अब उसमें और इश्यूज हैं, स्टेट बैंक उस पर काम कर रहा है, वी आर वर्किंग क्लोजली विद देम एज वेल कि उसको कैसे, बट जस्ट वांटेड टू पुट एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट। और ये जो 50% आप देख रहे हैं, सॉरी 45 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स देख रहे हैं, 50% ऑफ दैट इज जनरेशन Z. दे आर द यंगेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। उनके ट्रेंड्स और हमारे ट्रेंड्स जो हम सब यहाँ बैठे हैं फ़र्क हैं। Their expectations, their behavior is different. We want to go to a mall, they don't want to. We want to be on Facebook, they want to be on Snapchat. They want to be on Instagram, and they want to be on Discord. कितने लोगों ने Discord का नाम सुना है? Okay, see, that's the problem. You haven't even heard of the app. Discord is a chat app, which most of this young generation use. और हम अभी भी Instagram chat और Facebook chat और I was talking to someone and they're still on Hotmail, and I was like, I can't even believe that. So that's the challenge right now. वो Discord पे चले गए हैं, and they're running on channels, और वो सारा उनकी तरफ है। So जो मैंने आपको 18% दिखाया ग्लोबल एवरेज, पाकिस्तान इज अराउंड 2%. So पाकिस्तान की e-commerce to retail ratio is only 2%. ये नंबर्स हमने कंपेयर किए इंडिया वगैरह से। अगर आप देखें तो इंडिया हैज़ ग्रोन बियॉन्ड 2 to 4%. इंडिया का यहाँ जो नंबर आप देख रहे हैं, दिस इज प्री कोविड, US वॉज अराउंड 10%. द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू लुक इज कि ई-कॉमर्स को जो लीड कर रहा है वो वेस्ट नहीं है, वो ईस्ट है. चाइना वॉज प्री कोविड 27%, पोस्ट कोविड दे आर पोस्ट 30%. So China is leading the e-commerce space and not the US. So West is not the benchmark, China or East is the benchmark. और उसकी एक रीज़न है, उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे कोविड से पहले आपको याद होगा उन्होंने सार्स वायरस को बर्दाश्त किया था. जब सार्स का वायरस आया था शुरू में, तो दे ऑलरेडी वेंट थ्रू अ सिमिलर सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन्स बैक इन द डे, जो कि ग्लोबल पेंडेमिक नहीं बना बट वो एक रीजनल पेंडेमिक रहा. So they were already online and they are still used to it. So we are probably following the China or the eastern side of the model. पाकिस्तान का डेटा पहले भी जिक्र हो चुका होगा, इज अराउंड $4 billion. ये चेन स्टोर एसोसिएशन असफंदिया जो खामोशी से बैठे रहते हैं, और हमने बैठ के स्टेट बैंक के डेटा को एक्सट्रैपोलेट किया. एंड द रीज़न वी एक्सट्रैपोलेटेड इज बिकॉज डिजिटल पेमेंट्स आर ओनली 10%. सो 90% इज COD, कैश ऑन डिलीवरी. जैसे सुबह सायरा भी बात कर रही थी TCS से. सो द 90% हैज़ टू बी एक्सट्रैपोलेटेड बिकॉज वो कहीं कंसोलिडेट नहीं हो रहा. सो दिस इज अ रफ एस्टिमेट एंड दैट्स अ बॉल पार्क फिगर. ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक ई-कॉमर्स मार्केट की एक एवरेज एस्टिमेट है. इसके अंदर वो लोग शायद इंक्लूड नहीं हो रहे जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज यूज़ करें, लाइक चेकआउट या checkout.com या पेपैल और एनीथिंग एल्स. इसके अंदर जो बाहर एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर जा रहा है वो इतना रिकॉर्ड नहीं हो रहा. सो दिस इज नॉट प्रॉब्ली द राइट
number, but it's close to the best we can estimate. सारे sectors, सारे verticals grow कर रहे हैं, not just clothing or fashion, food, furniture, you name it, and it's growing. Toys, books, everything is growing. Like every literally single thing is being sold online in Pakistan and people are buying. एक बहुत बड़ा जो vertical है जो हम कहीं document कर नहीं सकते is the social commerce part. My personal estimate is that there are at least 1 to 2 million women entrepreneurs and micro and small and medium enterprises जो सिर्फ Facebook, Instagram, WhatsApp से बेच रहे हैं. They don't even have a web presence yet, and that's where these people are selling. वहाँ उसके अपने challenges और हैं, but social commerce is a huge opportunity which is right now growing because every person wants to sell, every student wants to sell something, and that's a growing space. And I know some people will bash me for this later, but the challenge is there with the marketplaces. Marketplaces do exploit globally, and that's a big challenge. So you need to have a strategy in e-commerce which is not just marketplaces. मेरे कुछ दोस्त शायद बाद में आएंगे दराज वगैरह वाले तो नाराज़ होंगे मेरे से, बट डोंट वरी, मैं उनको शीशा पे लाके खुश कर लूँगा. बट आई कैन टेल यू देयर इज़ अ चैलेंज विद ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस. एल्गोरिथम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है. सबसे बड़ा इशू जो अमेजोन के साथ भी आ रहा है कि द मोमेंट एनी प्रोडक्ट ग्रोज, अमेजोन लॉन्चेस इट्स ओन होलसेल प्रोडक्ट इन दैट कैटेगरी. And those kind of things are there. Of course, there's an opportunity, but there's a big challenge in that space as well. So what needs to be done from an SME perspective is you need to have a hybrid strategy. So जब आप Amazon या कोई marketplace करते हैं, Daraz, Food Panda, कुछ भी, certainly do that. There's no challenge with that. करें, ज़रूर करें, but that is only your earned or owned asset, earned or paid asset. That is not your owned asset. जब दिल करेगा इंस्टाग्राम आपकी शॉप बंद कर सकता है, जब दिल करेगा दराज या अमेजोन या फूड पांडा आपका स्टोर बंद कर सकता है, रेट चेंज कर सकता है, पॉलिसी चेंज कर सकता है, मगर आपकी अपनी वेबसाइट, अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर आपकी अपनी पॉलिसी है. नोबडी कैन चैलेंज दैट. आप कंट्रोल कर सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस, आप कंट्रोल कर सकते हैं डेटा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट पार्टी डेटा विच यू विल ओन ऑन योर ओन वेबसाइट एंड योर ओन एसेट. सो जब आप मार्केट प्लेसेस पर करें दैट्स बॉक्स मूविंग, बट जब आप ओन स्टोर पे करें दैट्स बिल्डिंग द ब्रांड. सो जो ब्रांड एक्विटी बिल्ड होगी वो आपके अपने नाम से होगी. बट मार्केट प्लेसेस पे जाना भी जरूरी है एज अ हाइब्रिड पार्ट इज बिकॉज यू नीड टू मूव बॉक्सेस एज वेल, वॉल्यूम्स एज वेल. बट द B&B पार्ट, ब्रांड एंड बॉक्स, बोथ नीड टू बी aligned properly for all brands. But this is something which is missing right now in Pakistan. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाइब्रिड के एंगल से है, you need to think cross border. And that's critically important, which I'm just going to highlight further. So this is the AC Nielsen's data. Anyone who ever bought anything online, there's a more than 50% probability that they will now buy online from a different country. So if you buy online from Daraz, the next thing you're going to buy is something from abroad. Whether it could be a digital product, like an e-book or a song on Spotify or something, but you are certainly going cross-border the moment you start doing e-commerce as a consumer. And that's a huge opportunity. And just to share कि पाकिस्तान यहाँ कहाँ stand करता है, this map of the world is drawn based on the size of exports of the country, each country. And you can see Pakistan up there. ये जो छोटा, सबसे छोटा सर्कल आपको नजर आ रहा है, दैट्स पाकिस्तान ऑन द टॉप लेफ्ट साइड. वाई? बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत थोड़ी हैं. अगर आप नीचे सिंगापुर को देखें, सिंगापुर 5 मिलियन लोग हैं, 50 लाख लोगों की कंट्री है टोटल. उनकी एक्सपोर्ट्स कितनी हैं? $373 बिलियन. ये डेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट बॉलपार्क फिगर इज राइट देयर. $373 बिलियन फ्रॉम 5 मिलियन पीपल. तो हमारी पर कैपिटा एक्सपोर्ट्स इज टू लो. सो द अपॉर्चुनिटी देयर इज क्रॉस बॉर्डर, ह्यूज क्रॉस बॉर्डर अपॉर्चुनिटी. और जो पहले भी जैसे बात हो रही थी, जो हमारे SME और आर्टिजन वाली कैटेगरी है, वहाँ क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्ट सप्लाई चेन्स, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन, वो सब कुछ ठीक होने वाला है. एंड दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो हम एज Chain Store Association and as PSHA, we are trying to work with the government, with Ministry of Commerce on the e-commerce policy. कि क्रॉस बॉर्डर कैसे ठीक किया जाए. आपने देखा होगा पाकिस्तान की लिस्टिंग अमेजोन के अंदर आई. अभी समथिंग वी आर वर्किंग ऑन इज कि जो आउट ऑफ पाकिस्तान आपकी शिपमेंट कॉस्ट है उसको कैसे बेहतर किया जाए.
the shipment cost per single packet is huge when you're shipping out of Pakistan. So I know there are workarounds for large organizations by shipping larger quantities and then warehousing abroad, but for an SME, that's not an easy thing. So we're trying to work out कि वो कैसे किया जाए. So those things need to be fixed out, but there is a certain huge opportunity cross-border for Pakistani exporters and SMEs as well. और ये, this is all B2C. The Amazons, the Etsy's, the eBays of the world have a huge, huge opportunity to grow beyond Pakistan. And just wanted to bring that to your attention कि खाली Pakistan is not your market. There's a huge opportunity for Pakistani products abroad as well, जो कि आप कर सकते हैं, Amazon just being one of the opportunities. So the title of my presentation was a magic moment, the magic moment of e-commerce for SMEs. So this is just where I wanted to highlight कि आपको 7-8 चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप e-commerce कर रहे हैं. बहुत सारे लोग समझते हैं मैं वेबसाइट बना लूँगा तो मेरी e-commerce चल पड़ेगी. But unless you fix your logistics, unless you fix your payment user experience, unless you fix your customer service, your social media, your returns, cancellations, your cross-border part, you are not fixing the whole value chain, there is always a challenge कि आपका e-commerce grow नहीं करेगा. One small little thing जहाँ majority brands पैसे cut करते हैं is photography. Your product photography is one of the key things in attracting a user when they are scrolling their feed. अगर आपकी photography अच्छी नहीं है तो पहली interaction ही नहीं होगी, तो of course sale ही नहीं होगी, end पे conversion ही नहीं होगी. So those small little things, the attention to detail is certainly required, and that's the actual magic moment. जब ये सब चीजें work कर रही होंगी तो आपको automatically growth और sales आएगी. And that's where the opportunity lies. So we need to really focus on all of these things and not just the tech or the marketing stack, but also the operations and the feedback loop has to be closed properly as well. But of course, one size does not fit all. Everyone has a different formula. You need to align yourself to your product, to your audience, and then work accordingly. And that's where this is. But keep calm. E-commerce is certainly growing. I have a different opinion than the panel we had, which thinks e-commerce is not growing as much. Trust me, e-commerce is going to leapfrog in Pakistan. The kind of policy changes being done by the leadership will certainly have an impact, far more reaching impact coming soon, I think. And that's probably the future. Of course, it will be hybrid. We'll certainly have malls. So Faisal, don't worry, the malls will certainly operate. And I'm looking forward to the Lahore mall being ready soon. So hopefully we'll have the Dolmen in Lahore coming soon. So I think there's certainly an opportunity, but e-commerce will be probably the fastest growing in the whole ecosystem. Thank you so much, Ji. Thank you.